Hello everybody, this is Rashmi, and in today's video we are going to discuss some important string Java patterns. Let's start the pattern. As you can see over here, this is again a right angle pattern. Alright, as you can see here, the number of rows and number of columns are equal. This concept we have discussed in the number program also, so we will not focus over here. We will focus how we are going to a string pattern in this video. Before starting the program, we must understand few important functions which we are going to use in our program, which will help us to make this pattern. Let's discuss them. The first string function is length function. Length, it is used to find out the length of the string. That means whatever the string you are going to be using in your pattern, or either it is predefined or it is user defined, you must know the length function. What the length function does? It is used to calculate the length of the string. How you are going to calculate? Let's take the example for it. This is the string s, where you can see over here the string value is blue jay. So this function simply tells you that means how many characters. Always remember, string is a collection of character. Alright, so how many characters are present in your particular string? If the user defined string is there, in this case you can't be predict कि इतने number हो सकते हैं या उतने हो सकते हैं. You can't be predict that thing. But if it is predefined, so आप normally उसे count कर सकते हैं. It can be done. But it is very important for the user defined functions. Alright, so this function will return the integer value. That means length आपको integer मिलेगी. It never be double, never be fractional, never be float. Alright, it always integer. So let's take the example over here. Int L equal to s dot length. How you are going to be calculate the length of this string? By using the length function. Okay, how you are going to be use this length function? Using dot operator. So s की length find out करनी है. As you can see over here, the string what we have, blue jay. So you just simply count B L U E J. That means a number of characters are present in blue jay is 5. Alright, now one more important function is over here, that is the caret. Caret, always remember, caret is a single character, a single function. Char at is a combined word. इसको separate मत करिएगा. One thing you should remember, the character C should be small and at A should be capital. This is a syntax form जो कि आपका correct होना चाहिए. एक भी चीज़ आप इसमें capital small गलत कर देंगे तो आपका ये function work नहीं करेगा and it will cause an error in your program. Alright, so what is the use of this caret function? This caret function will extract the character from the string. As I told you, string is a collection of characters. That means कई सारे character मिल के आपकी string बनाते हैं, तो आपको उन string में से उन characters को fetch out करना होगा, या means निकालना होगा. Like it's a basic example you can understand when we are making a number program. Then in that case we just need to be separate the digit of that number. हमें उनकी डिजिट सेपरेट करनी होती है. उसका एक कोड भी हमने आपको डिस्कस किया है पिछले प्रोग्राम्स में. एंड द सेम वर्किंग विल बी ओवर हियर वेयर यू हैव टू बी एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग. ऑलराइट, सो यू कैन सी अ टेबल ओवर हियर. कैरेक्टर्स, caret function is work on index value and the length. Both are the different things. Length should be counted from the 1 and index value will be counted from 0. As you can see over here, B L U J E. So how you are going to be count over here? 0 1 2 3 4. That means index value is 4 and length is 5. But अगर आप इसको 1 से count करेंगे, it will give you 5. But आपका ये array में store होता है. So array का index आपका start कहाँ से होगा? 0 से start होगा. तो separate value. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इट शुड बी कम इन टू योर माइंड कि कैरेट फंक्शन आपकी किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है. तो दिस फंक्शन विल रिटर्न यू अ कैरेक्टर वैल्यू. लेट्स टेक द एग्जांपल फॉर इट. लेट अस सपोज वी हैव to find out the caret function over s string. We will take the same s string over here, that is blue jay dot caret 2. तो 2 पे as you can see over the table, you can see over it the value of 2, index value of 2 is u. They are talking about here index value. It will take argument as an integer
and it will return a character value. Alright, so your answer will be U. These two functions are very important to make the pattern program. So you must aware both the functioning of the both functions. Alright. Now let's start with the code. First, as usual, we are writing the class name, then main method, then here we are taking a predefined string. If you are not going to take the predefined string over here, you need to import the package, then ask to user to enter the string, and then you need to be store that string. For this you can use scanner method over here or a buffer reader. It's completely on your choice. Alright, so here I am taking the predefined string, that is blue jay. So now what is the next step is the simply we are run the loop for the row wise. That means first you must understand how many characters are present in the string. Accordingly your row will form. Okay, for the finding the character number of character, we are using the string length function over here. Alright, as you can see, the length index will start from 0 and it will goes less than s डॉट लेंथ. दैट मीन जितनी भी लेंथ होगी उससे कम होगा. जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था कि इंडेक्स वैल्यू हमेशा लेंथ से कम होती है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग ओवर एयर लेस देन फंक्शन एंड देन वी विल इंक्रीज द वैल्यू 1 by 1. एंड दिस इज फॉर द रो and the column value. We will run one more loop inside the row value. This row value, this column value will be completely dependent on the row value. All right. So because it's a completely based on the right angle triangle pattern, तो ज़्यादा change नहीं है. इससे small changes हैं. You just need to be focused over here. Now this time you need to be fetch out the characters. ऑलराइट, अब प्रिंट करना है, वहाँ पे आई जे की वैल्यू प्रिंट करनी होती थी तो कोई इशू नहीं था. बट हेयर यू डोंट नीड टू बी प्रिंट आई जे वैल्यू. दैट मीन रो कॉलम नंबर्स वैल्यू यू डोंट नीड टू बी प्रिंट. यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द character. For the printing the character, first you need to extract the character from the string. So for the character extraction, I have a caret function. So we are going to be take s dot caret function and we are going to pass the value of j over here. Okay, because हम j के accordingly print कर रहे हैं. Now print this j value over here. System dot out dot print in bracket ch, because we are holding the caret value in ch as a character value. Then we give a space because एकदम थोड़ा सा formation proper आए, that's why we are giving a space over here. Then close the j bracket. After that line change code will be used, system dot out dot println, and at last we will print the row bracket and then method bracket and class bracket. Now this is the reverse pattern. The working will remain the same. The first thing you must be understand what is the slight change in your code which make this pattern will invert manner or a reverse manner. That means जो आप straight like आप blue jay print कर रहे थे तो b b l b l e like ऐसे प्रिंट हो रहा है. अब क्या हो रहा है, पहले फुल लाइन होगी, देन उसके बाद एक कैरेक्टर कम, देन दो, फिर वन, लास्ट सिंगल कैरेक्टर रह जाएगा. दैट मीन कंप्लीट रिवर्स पैटर्न है. ऑलराइट, सो इसको भी देख लेते हैं. फंक्शंस दोनों में सेम रहेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नेम, then main method, then I've taken a string over here ICSC. Then in this case you need to run the reverse looping of the row. For the reverse looping, how the loop of row will completely depend on the length of the string. All right, always remember this thought. Your index value will start from the 0 and your length value start from the 1. So we are taking the length value initialize लूप को फॉरवर्ड लूप बैकवर्ड लूप चलाना है. दैट मीन वैल्यू को हम रिवर्स कर देंगे. तो फर्स्ट आई विल गोइंग टू स्टोर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 लेस वैल्यू बिकॉज इट्स वर्किंग ऑन द इंडेक्स वैल्यूज. सो एक वैल्यू आप लेस कर लीजिए एस डॉट लेंथ -1. ऑलराइट, एंड टिल कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 0 नहीं हो जाती. दैट मीन लास्ट कैरेक्टर तक प्रिंट होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर तक, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर तक, एंड डिक्रीज करेंगे. दिस इज द लूप फॉर रो. नाउ इनसाइड इट वी विल रन द कॉलम लूप बिकॉज वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू straight with the help of column values. So there is no
बैकवर्ड लूप ओवर ईयर, ये बिल्कुल आपका फॉरवर्ड लूपिंग की तरह बढ़ेगा. देयर द वैल्यू ऑफ j विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड इट विल गोज j लेस देन इक्वल टू i. दैट मीन्स j की वैल्यू पूरी डिपेंड करेगी i की वैल्यू पे, एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट द j वैल्यू. तो j वैल्यू, for this we need to extract the character. We will use caret function over here, s dot caret j. After that we will print the value system dot out dot println ch and then space, then close the j value method function of the j, and after that close the row, use the change line change we must use over here system dot out dot println, and at last we will close द रोज ब्रैकेट ओवर हेयर. जो लूप आपका रो के लिए रन कर रहा था उसे क्लोज करेंगे, देन मेथड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू क्लोज द क्लास ब्रैकेट. सो स्टूडेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड स्लाइटली लिटिल बिट चेंज करके. अगर आप यहाँ पे जो जे की वैल्यू है इसको भी रिवर्स कर देंगे तो यू कैन सी कि कुछ वैल्यू, कुछ पैटर्न आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. प्लीज़ मस्ट ट्राई दिस बाय योर सेल्फ कि जिसमें आप j की वैल्यू भी रिवर्स चलाएंगे. दैट मीन j की वैल्यू i से लेके कहाँ तक चलाएंगे, लेस देन इक्वल टू 0 तक चलाएंगे. तो उसमें भी आपका एक डिफरेंट पैटर्न फॉर्म होगा, एक स्लाइड सा चेंज कोड में, एंड द पैटर्न फॉर्मेशन विल बी चेंज. सो दिस इज माई सेकेंड वीडियो फॉर द पैटर्न बेस. आई होप you like this video. Thank you so much for the watching this video.